Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Miss every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with a nasty bite out. In the dead of the night, teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control. It's a good start. So here we go, the players make their way out to a seismic crowd. They've waited all day for this match and they're ready for some world-class batting and bowling. The pitch today, that looks good. A bit of grass on top, so they'll get their wish, I think. We're about to get underway and already the crowd is up and about. This is looking to be a great day of cricket. हेलो अभिराम भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच यार, बहुत दिन के बाद आने के लिए। क्या हाल है आपके? चलो, हम एक और लाइव मैच के साथ वापस आ चुके हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। जानता हूँ थोड़ी सी मतलब कंसिस्टेंस अभी भी नहीं हो पा रहा हूँ, यही सोच लो कि कुछ ज़्यादा ही बिज़ी ज़िंदगी में चल रहा हूँ और ऊपर से साथ साथ ज़िंदगी साथ साथ चलने के साथ साथ ना क्या हो रहा है, यूट्यूब और कभी हमारी जो स्ट्रीमिंग ऐप है उसकी भी जो इशूज़ सामने आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है एक साथ में, मतलब क्या ही बोलूँ। ज़िंदगी सब कुछ सही चल रहा था और एकदम से ना स्ट्रीमलैब ओबीएस की अपडेट आ जाती है और जैसे ही स्ट्रीमलैब ओबीएस की अपडेट आती है ना उसके बाद से मतलब 1-2 महीने के लिए तो धज्जियाँ उड़ जाता है स्ट्रीम्स की। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो अपडेट लाते हैं, उसमें फिक्स होता है वो। चलो पहला बॉल डालते हैं। First ball of the match. टॉस जीत गया है न्यूजीलैंड आज। Perfect, right out of the middle and blackens that one to the boundary. That really wasn't a great delivery. Seen early and it was dispatched with a plum. Sharma has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits.
Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. मैं ना नोटिफिकेशन ऑन नहीं रिया कल है चैनल देख। कोई बात नहीं अभिराम भाई। वैसे भी मैं 9 महीने के बाद आ रहा हूँ स्ट्रीम करने के लिए। थैंक यू। ओह नाइस शॉट। Over the ball, great shot. That's racing one. कवर ड्राइव Four बोलते हैं। runs. They were so still at the crease, just a slight movement forward. Fabulous shot. ये तो सबसे इजी बॉल है बताओ। मतलब बॉल जब बॉलर आके Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. एकदम वाइड यॉर्कर की लेंथ में गेंदबाजी करेगा ना तो वो सबसे इजी है चौका मारने के लिए। ये थोड़ी सी अच्छी बॉल है, फील्डिंग पोजीशन के हिसाब से सटीक लाइन। लेकिन इससे पहले जो 2 भी बॉल आए थे दोनों ख़राब लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी हुई थी उसमें। नाइस बॉल। Can't get that outside the ring field. बहुत बढ़िया बॉल था ये, क्योंकि ज़्यादा कोई चांस नहीं था। मैं अगर ज़्यादा इसको ऑफ साइड की तरफ मारने जाऊँ तो फिर यहाँ पे कीपर के पास जाएगी बॉल। तो सही लाइन। Great shot, rode the ball up with him and cut through point. You just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. End of the over, 13 coming from it. India, 13 for none. स्टार्ट हो चुकी है मारपीट भाई इस मैच में तो। End of the first and an exceptional start. Some big shots early on. Can build some momentum easily off that over. The right arm pace bowler is coming into the attack from the Garware Pavilion end. Doesn't beat the infield. Late cut, straight to the fielder. Was quick onto that in the infield. Samson, stand and deliver. Holds the pose as the ball goes straight over the bowler. 6 more. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Seven runs added in that over. India at 20 for none. Off to a strong start. 2 excellent overs to begin with. Jameson from the Tata end. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Straight to the fielder. एफसी मोबाइल खेल रहे हो? नहीं भाई, क्रिकेट एफसी मोबाइल छोड़ दिया मैंने खेलना। आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड विथ द एफसी कम्युनिटी। तो बैक टू बिजनेस आ गया हूँ मैं।
फिर से वैरायटी स्ट्रीमिंग, पीसी गेम्स, अलग अलग गेम्स। Caress that nicely through the gap to the boundary. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Misses everything. 5 runs added in the over. India 25 for none. They've settled into a nice rhythm that over, it seems. वैसे आपने क्या खाया अभी राम भाई, बताइए। Bang, sent back over the bowler's head. Mid-off and mid-on can only watch as that ball sails into the crowd. How clean did they hit that? Plays that immaculately with a straight bat. Santner, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Beats the field with a great shot. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. उपमा खाया आज रात को, डिनर को। कितना बढ़िया, देखो बल्ले के बीचों बीच लग के गई है शॉट। ये होती है लाजवाब बल्लेबाजी। Line and length is the key here. कमाल की लेंथ के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए, और उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा के बल्ले से। फिर से एक गुड लक की गेंद, लेकिन इस बार गेप ढूंढने में नाकामयाब। आप सबके लिए हिंदी कमेंट्री करूँ मैं गाइस? चलो आप सबको बहुत मज़ा आएगा, रुको मैं हिंदी कमेंट्री करता हूँ। बहुत टाइम के बाद मज़ा आएगा, हिंदी कमेंट्री करेंगे। लकी फर्ग्यूसन कमाल की लेंथ और गति के साथ गेंदबाजी करते हुए नज़र आता है। ये बंदे खिलाड़ी हर एक मैच में काफ़ी प्रभाव छोड़ते हैं। इस बार सामने है अभिषेक शर्मा, जो कि पिछले साल की सबसे सर्वोत्तम बल्लेबाज है इस फॉर्मेट के। T20I के #1 बल्लेबाज हैं। ये देखिए कमाल की इनकी काबिलियत है, कमाल की इनकी बल्लेबाजी करने की तरीका। आज थोड़ी सी धीमा खेला है अभिषेक शर्मा ने पिछले कई सारे इनिंग्स के साथ। कहीं ना कहीं वो सटीक टप्पे पे गेंदबाजी होती हुई नज़र आई है आज। 10 रन वैसे भी आ चुके हैं इस ओवर से। अभिषेक शर्मा ने एक छक्का और चौका ज़रूर जोड़ा है, और सिंगल लेने के साथ साथ संजू सैमसन करेंगे सामना आखिरी गेंद की इस ओवर का। अपर कट, व्हाट ए शॉट बाय संजू सैमसन। थोड़ी सी आप इनको अगर जगह देंगे तो फिर ये इस गेंद को तब्दील करेंगे छक्के के लिए। ये है, देख लीजिए कमाल का बल्लेबाजी, लाजवाब खिलाड़ी है ये संजू सैमसन। अगर आखिरी शॉट के ऊपर हम नज़र डालें तो फिर देखिए यहाँ पे गलती कर बैठे थे, थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ की गेंदबाजी कर दिया यहाँ पे, जिसको कि बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट कर दिया संजू सैमसन, और कोई मौका नहीं। छोटी मैदान है ये, बल्लेबाजी के लिए काफ़ी बेहतरीन मानी जाती है, और इसके चलते एक लाजवाब शॉट छक्के से हुआ था। शुरुआत छक्के से हो गई है अंत उस ओवर की। देखिए स्कोर की अगर बात, ये शॉट भी कड़क है, ये शॉट भी गजब है। जितनी ये खिलाड़ी की कद है कई गुना अच्छा शॉट है ये। फिर से शॉर्टर लेंथ की गेंद, बहुत अच्छा खेलते हैं ऑफ साइड में अभिषेक शर्मा, बिल्कुल बख्शते नहीं। अगर आप इस लेंथ में गेंदबाजी करेंगे तो फिर मिलने का हुआ है स्वागत चौके के साथ। नेक्स्ट गेंद, बैक टू बैक बाउंड्रीज यहाँ पे भारत के लिए। पिछली बार नज़ाकत से खेली गई शॉट, वो कवर ड्राइव के बाद इस बार क्रिकेट की जगत की सबसे खूबसूरत स्ट्रोक लगाई है अभिषेक शर्मा ने, स्ट्रेट ड्राइव, और इस शॉट के साथ साथ एक 50 रन की पार्टनरशिप पूरी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के बीच में। कमाल की
ये मैच रही है डाउन द आर्म पुल शॉट, फिर से गई है एक और चौका के लिए। बल्लेबाजी पसंद है इस खिलाड़ी को और ये मैदान भी बल्लेबाजी को सपोर्ट करती हुई। एक और छोटी गेंद, प्रॉपर तरीके से टाइमिंग किया जिसके चलते यहाँ पे रन्स मिले हैं भारत को। 3 गेंदे 3 चौके आ चुके हैं। अब कहाँ डालेंगे गेंद, और ये फिर से गई है कवर के दिशा में, डीप कवर के तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, फिर से मिलेगी एक और 4 रन। सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अभिषेक शर्मा और कुछ नहीं। देखिए गेंद, मुझे तो दया आ रही है मिलने के ऊपर कि वो अगर छोटी गेंद कर रहे हैं तो फिर उसको पुल कर रहे हैं, अगर आगे के तरफ डाल रहे हैं तो फिर फ्रंट के तरफ खेल के सामने के तरफ। ओह ये सटीक लाइन, बहुत बढ़िया। अगर थ्रो अच्छी होती तो फिर यहाँ पे मौका बन सकता था न्यूजीलैंड के लिए। और हम ये बोल रहे थे कि अगर सामने की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर ये लगाया था चौका सामने की तरफ स्ट्रेट ड्राइव के चलते, और अगर ऑफ स्टंप के बाहर तो फिर बढ़िया खेलते हैं अभिषेक शर्मा। ये देखिए चांस बन गई थी एक इस थ्रो के चलते। ऐसी जो सिचुएशन से थोड़ी बच के रहनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए रिक्वायर्ड जो रन रेट अभी चल रही है वो अगर हम देखेंगे तो फिर अब 9 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रही है। और बहुत बढ़िया आउट स्विंगिंग गेंद, पिछले 4 गेंद से 2 गेंद डॉट गेंद के साथ करेंगे ओवर की समाप्ति। लाजवाब ये ओवर भारत के नज़रिए से देखा जाए तो। मिचेल सैंटनर आए हैं, पिछली ओवर में जिस तरह की मार पड़ी थी उससे मिचेल सैंटनर कप्तान खुद आ गए हैं। थैंक यू, ठीक है अभी नेक्स्ट टीम पे मिलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अभिराम भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेरे भाई, थैंक यू। चलिए कप्तान सामना करेंगे उनका संजू सैमसन, हल्की हाथों से खेला है लॉन्ग ऑन के दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है, ज़्यादा रन्स नहीं बनेंगे लेकिन स्ट्राइक रोटेट करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये पावर प्ले की आखिरी गेंद है, माफ़ करिए आखिरी ओवर है और 4 गेंद बाकी है। इसके बाद अतिरिक्त और 2 खिलाड़ी जो है 30 गज के जो रेखा है वहाँ से बाहर खड़े हो सकते हैं, तो वहाँ पे बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मैं तारीफ़ करूँगा न्यूजीलैंड की कप्तान की, जानते हैं इस पिच में टर्न है, इस पिच में मदद है स्पिनर्स के लिए, तो खुद आए कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट और उसके चलते ये देखिए सिंगल्स पे तब्दील हो रही है। एक समय पे जब लगातार बाउंड्रीज नज़र आ रही थी इस पिच में, अब सिंगल्स पे चल रही है। ये शॉट भी बहुत अच्छा, फिर से कवर ड्राइव, खिलाड़ी मौजूद है डीप कवर में, एक और सिंगल मिलेगा। बहुत बढ़िया किफ़ायती ओवर चल रही है। वैसे तो देखा जाए एक समय पे 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन रेट हो गई थी, मिचेल सैंटनर आके उसको नीचे कर दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा शॉट, वेट किया, इंतज़ार किया इस शॉट के लिए और बखूबी इस गेंद को भेज दिया है डीप स्क्वायर लेग के तरफ। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं इस ओवर की आखिरी गेंद में, पावर प्ले की आखिरी गेंद में एक कमाल की खूबसूरत शॉट अभिषेक शर्मा से, चौके के साथ करेंगे ओवर का समाप्ति। 65 पे 0 भारत। मिलने आए, पहली ओवर काफ़ी महंगा रहा था और अगली बॉल बहुत अच्छा बाउंसर, थोड़ी सी बॉडी के तरफ आती हुई बाउंसर। खेलना मुश्किल होता है, उतनी आसान नहीं रहता है। अगर थोड़ी सी ये लेंथ में परिवर्तन हो जाए या फिर थोड़ी सी ये मिडिल स्टंप के आसपास आ जाए तो फिर संजू सैमसन भी पुल करना जानते हैं, बहुत अच्छा पुल शॉट लगाते हैं वैसे संजू सैमसन। ओह अच्छी शॉट, आखिरी समय पे बल्ले का फेस खोला और पॉइंट की दिशा में चौका। गजब की ये कला है संजू सैमसन के पास, टाइमिंग भरपूर थी इस शॉट में। ये देखिए गली के एरिया में जो खिलाड़ी थे वो देखते ही रह गए, लाजवाब बल्लेबाजी। बैकफुट में खेली गई एक और शॉट, ओह रन बचाते हुए यहाँ पे
भाग्य का साथ यहाँ पे मिलने को थोड़ी सी, क्योंकि शॉट्स तो खेला था सामने की तरफ एकदम डाउन द ट्रैक बैक फुट में, लेकिन गेंद जाके टकरा गई अभिषेक शर्मा को। और अब जो कि पावर प्ले का खात्मा हो चुका है, तो इतनी भाग्य का साथ इस बार संजू सैमसन को बहुत बड़ी बाहरी किनारा लगा था, बाल बाल बचे यहाँ पे संजू सैमसन। बॉल गई दूसरी स्लिप के आसपास से जहाँ पे स्लिप मौजूद नहीं थी। थोड़ी सी अगर इधर होती तो फिर वो कीपर के हाथ में भी आ सकता था, क्योंकि अक्सर हमने न्यूजीलैंड के कीवी को उड़ते हुए देखा है। चलिए 2 चौके आ चुके हैं इस ओवर में, चौथा गेंद है ये इस ओवर का। हल्की हाथों से खेला है सिंगल, डीप पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद, मिलेगी एक और रन। और उसके साथ साथ अभिषेक शर्मा आएंगे वापस इस मैच में बल्लेबाजी करने के लिए। लगभग 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रही है। ये शॉट भी अच्छी है, ये शॉट भी कड़क है। वैसे टाइमिंग इतनी भरपूर थी कि खिलाड़ी के पास मौका ही नहीं बना, खिलाड़ी बस देखते रह गए ये 4 रन को। बहुत प्यारा शॉट, बहुत अच्छी शॉट मैं तो कहूँगा। चलिए 78 पे पहुँच गई है, 12 रन के आसपास ये जो है रन रेट चल रही है अब। बहुत बढ़िया लाइन। ये गुगली गेंद के लिए इंतज़ार कर रहे थे। मेरे हिसाब से कल्याणियों से परखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पिनर्स को, क्योंकि अगर आप स्पिनर्स के विरुद्ध अगर आप नॉर्मल ऐसे साधारण सी बल्लेबाजी करेंगे तो फिर यहाँ पे मौका बन जाता है कि आप विकेट गंवाएंगे, चाहे वो तेज़ गेंदबाज हो चाहे वो स्पिनर हो। लेकिन देखिए तेज़ गेंदबाज के पास तो आपके पास इतना समय नहीं होता है कि उनको कलाइयों से आप पहचान पाओगे ये कहाँ पे गेंदबाजी करने वाले हैं, किस लेंथ में गेंदबाजी करने वाले हैं। लेकिन स्पिनर के पास आपके पास वो समय रहता है। ओह अच्छी शॉट, एक रन फिर से मिलेगी पॉइंट के दिशा में और डीप गली में खिलाड़ी मौजूद है जो कि ज़्यादा रन देते नहीं हैं। और फिर से एक और सिंगल, और स्ट्राइक रोटेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी थ्रो थी वैसे, और इस मैदान में 2 रन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उतनी बड़ी मैदान है नहीं, ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज देखने को मिलती नहीं है। 68 मीटर की बाउंड्रीज देखने को मिलती है, जिसमें सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के लिए भी कमाल की यहाँ पे दोनों खिलाड़ी के बीच में तालमेल होना ज़रूरी। और ये देखिए इन पे नज़र रखिए, फ्लाइंग कीवी कहते हैं हम इसको। ओवर की हो गई समाप्ति, मैट हेनरी आए गेंदबाजी करने के लिए। रन रेट की बात करी जाए तो फिर 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रही है, और इसी हिसाब से अगर चलेगी तो फिर 261 रन बना सकता है भारत। कमाल की ये बल्लेबाजी शुरुआत हो चुकी है, अभी तक एक भी विकेट नहीं गंवाया है भारत ने। और दूसरी छोर पे देखिए अभिषेक शर्मा पूरी तरीके से कगार में खड़े हुए हैं अपनी अर्धशतकीय पारी के। 29 गेंदों का सामना करते हुए 48 पे पहुंच गए। ओ सिंगल की मांग कर रहे थे लेकिन मना किया, बहुत बढ़िया कॉल। अगर ये रन के लिए जाते तो फिर मेरे हिसाब से विकेट गंवा देती भारत। और ये जो मैट हेनरी हैं इनको थोड़ी सी संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास वो बॉल को स्विंग कराने की कला है। वो एक ही टप्पे में डाल के वो बाहर के तरफ स्विंग करा सकते हैं और इन स्विंगिंग गेंद भी कर सकते हैं, तो थोड़ी सी संभल के खेलना पड़ेगा। और जो हाइट भी इनका है अच्छा। ओह देखिए इसी गेंद के बारे में बात कर रहे थे हम कि उसी टप्पे पे गेंद डालने के बाद ये इन स्विंग भी कर सकते हैं, गेंद को आउट स्विंग भी कर सकते हैं, और इतना हाइट भी ज़्यादा है तो फिर एक अतिरिक्त उछाल भी इनको प्रदान होती है। और ये स्लॉट पे आ गई है गेंद, और स्लॉट पे आई है तो फिर छक्के के लिए जाएगी गेंद, और छक्के के साथ साथ एक और अर्धशतकीय पारी पूरी अभिषेक शर्मा का। 54 में पहुंच गए इस छक्के के साथ। लाजवाब शॉट था वो, फुलर लेंथ की गेंद, यॉर्कर मिस किया, और अगली गेंद कवर के दिशा में चौका मिलेगा।
छक्के के बाद चौके के साथ करेंगे ओवर की समाप्ति। एक और बेहतरीन ओवर, देखिए कुछ झलकियां ये अरसतिया पारी की। खूबसूरत खिलाड़ी, पहले शुरुआत किया था उस छक्के के साथ जो कि सामने की तरफ गई थी, और फिर लगातार चौके सिंगल्स पे कन्वर्ट किए डबल्स को, क्योंकि यहाँ पे डबल्स लेना काफ़ी मुश्किल है। छोटी बाउंड्रीज मानी जाती है, चाहे वो कवर के दिशा में खेलना हो, चाहे वो पुल शॉट हो, मैदान के हर दिशा में खेला है। इस बार सिंगल का अमूमन बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल करते हैं अभिषेक शर्मा, लेकिन एक प्रॉपर बल्लेबाजी विगन विल, ये काफ़ी तारीफ करना चाहूँगा मैं। 34 गेंदों में 58 रन पे पहुँच गए अभिषेक शर्मा। डैरेन मिचेल आए हैं, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के खेमे में। सामना करेंगे अभिषेक शर्मा, माफ़ करिए संजू सैमसन। 20 गेंदों में 34 रन पे खेल रहे हैं। अच्छी शॉट कवर की दिशा में जाएगी और चौका देती हुई जाएगी। एक और लाजवाब स्ट्रोक, बेहतरीन ड्राइव करने के लिए जाने जाते हैं संजू सैमसन। अगर इनके पाले में गेंद आई तो फिर आप भूल जाइए, आपको सिंगल डबल या डॉट गेंद मिलने वाली है नहीं। और सबसे बड़ी जो सवाल होती है, इनके पास रेंज काफ़ी ज़्यादा है। अच्छी लाइन ये, जी हाँ। और हम चर्चा कर रहे थे संजू सैमसन की बल्लेबाजी के बारे में कि इनके पास रेंज बहुत ज़्यादा है। अगर आप हल्की सी भी लेंथ में परिवर्तन करेंगे तो फिर ये आपको पुल शॉट, सूप शॉट, अपर कट, जैसे आज हमने एक मैच भी देख रखा था, ये देखिए छोटी गेंद करेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा खामियाजा। इस छक्के के साथ शतकीय पार्टनरशिप पारी भी हुई पूरी। नज़र डालेंगे उस लेंथ में जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। थोड़ी सी अगर आप इसको छोटी गेंद करेंगे तो फिर ये पुल शॉट भी बहुत अच्छा खेलते हैं। अक्सर हम पुल शॉट की चर्चा होती है तो फिर रोहित शर्मा की बात करते हैं, लेकिन संजू सैमसन भी कमाल के पुल शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया हार्ड हिटिंग स्ट्रोक्स लगाते हैं संजू सैमसन, और इस छक्के के साथ खुद 44 पे पहुंच गए। हल्की हाथों से इस बार सिंगल किया, लॉन्ग ऑफ के दिशा में एक खिलाड़ी मौजूद और बहुत बेहतरीन थ्रो। और देखिए जिस कंडीशंस में भारत अब बल्लेबाजी कर रही है, यहाँ से 250 रन बनानी तो काफ़ी आसान होनी चाहिए भारत को, क्योंकि देखिए 10वीं ओवर मेरे हिसाब से ये चल रही है। और अगर 10वीं ओवर में अगर आप 103 रन से ज़्यादा बना देते हैं तो फिर हम यहाँ से दुगना तो सोच ही सकते हैं कि 250 के आसपास तो स्कोर देख ही सकते हैं आज। लेकिन अगर भारत विकेट नहीं गंवाती है तो फिर बहुत बढ़िया बॉल, यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार थे अभिषेक शर्मा, लेकिन वो खराब गेंद के लिए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत बढ़िया, एक और स्लोअर बाउंसर। डॉट गेंद के साथ ओवर का होगा समाप्ति। 103 पे 0 भारत। आगे की होने वाली है 10 गेम। रोमांच अभी आगे बाकी है, क्योंकि स्पिनर्स आएंगे, आगे टर्न्स भी देखने को मिलेगी, और इस मैदान में उतनी बड़ी बाउंड्रीज नहीं है, तो फिर ये एक प्रेशर भी होगा भारत के ऊपर कि आपको 200 के ऊपर का लक्ष्य देना ही है न्यूजीलैंड के सामने, नहीं तो ये टीम बड़ी आसानी से चेज़ कर सकती है। क्योंकि एक से एक बड़े कितनी खूबसूरत मैदान है। देखिए रात को तो यहाँ पे अलग ही मंजर देखने को मिलती है। चलिए, बहुत अच्छा शॉट खोद के निकाला है अपने टैलेंट से अभिषेक शर्मा ने। काफ़ी किफ़ायती गेंदबाज माने जाते हैं मिचेल सैंटनर, न्यूजीलैंड के कप्तान, लेकिन उनके गेंद को भी भेज दिया है चौके के लिए कवर के दिशा में। एक खूबसूरत कवर ड्राइव, बल्ले के बीचों बीच, टाइमिंग और प्रोफेशन एक ही शॉट में। अगली गेंद फिर से खेला गया है ये शॉट। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी करेंगे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। कुछ इस तरह से बल्ला बोलता है जब ये शॉट लगाते हैं अभिषेक शर्मा। अब तो देखिए खुद 67 पे पहुंच चुके हैं, और अमूमन ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हम देखते हैं ये चौके या छक्के से डील करना पसंद करते हैं। पिछली गेंद को ये
कवर के जो खिलाड़ी है उनके दाएं तरफ से मारा था और इस बार बाएं ओर से खेला है। अभिषेक शर्मा यहाँ पे पूरी तरीके से फील्डिंग के साथ खेलते हुए। मिचेल सेंटनर खुद से काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे थे। ये शॉट को अगर हम नज़र रखेंगे कितनी बेहतरीन तरीके से खेला, देखिए दूर रखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल विकेट की तलाश में है न्यूजीलैंड, ये काफ जाहिर होती हुई। और अभिषेक शर्मा को भी पता था कि बाहर आएगी गेंद और प्रॉपर सिर्फ इनको टाइमिंग करने की ज़रूरत थी और वो टाइमिंग ढूंढ निकाला अपनी पिटारे से। 3 गेंदों में 3 लगातार चौके, कमाल के खिलाड़ी। और अगली बार डॉट गेंद, चलिए कोई बात नहीं, जो डैमेज निकालना था इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने कर लिया है। ऑलमोस्ट 40 गेंदों में 70 पे पहुंच चुके हैं और 30 रन से पीछे चल रहे हैं अपने शतकीय पारी से। ओह अच्छी बॉल ये है, अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी। चलिए फिर भी आए 13 रन इस ओवर से। डॉट गेंद के साथ होगी ओवर की समाप्ति। 116 पे 0 भारत। डैरेन मिचेल आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली ओवर काफ़ी महंगी, बहुत दूर दिशाहीन गेंद है ये। मेरे हिसाब से वाइड बॉल करार दिया जाएगा और बिल्कुल अंपायर का भी मानना यही है। और ये जो प्रेशर है ये साफ नज़र आ रही है, अभी तक एक भी विकेट गिराने में कामयाब नहीं हो पाई। फिर से शॉर्ट गेंद, जिसको एक और कमाल की पुल शॉट के साथ छक्के में तब्दील करेंगे और छक्के के साथ साथ अपनी अर्धशतकीय पार्टनरशिप पूरी, माफ़ करिए अर्धशतकीय पारी पूरी किया है संजू सैमसन ने। अभिषेक शर्मा ने भी चौके के साथ जो है अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी किया था। और अगली गेंद देखिए स्लॉट में आएगा तो फिर बख्शेंगे नहीं। दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं। अब इनको तो अभी गेंद जो है फुटबॉल जैसी नज़र आ रही होगी। ये बहुत बड़ी नज़र आ रही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे लेंथ पे खराबी गेंदबाजी। आप जब इस तरह की फील्डिंग के साथ खेल रहे हैं और प्लेयर नहीं है, ओ ये तो भाई कुछ अलग शॉट देखने को मिला। यहाँ पे स्लाइस करने की कोशिश थी, फुलर लेंथ की गेंद, माफ़ करिए बाउंसर थी, इसको स्लोअर बाउंसर को परख लिया था संजू सैमसन ने और सिर्फ चिप किया इसको। देखिए पल्ले के बीचों बीच लग के गेप में चली गई गेंद। और इस मैदान में अगर गेंद गेप में जाती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है भारत न्यूजीलैंड की टीम को। 131 पे पहुँच चुकी है वैसे तो, और आगे की 8 ओवर वैसे भी ये पूरी ऊपर उठ गई है गेंद। मिसफील्ड, मिस जर्ज कर बैठे इस गेंद को। एक तो विकेट आ रही थी भाई, इसमें भी नहीं पकड़ पाए। चलिए पूरी तरीके से मिस कर बैठे उस गेंद को। ये देखिए पूरी तरीके से मिस कर बैठे। और जब ये प्रेशर होती ही ऐसी एक चीज़ है भाई, जब आपके ऊपर प्रेशर होती है तो फिर जो आपके हाथ में आए हुए लड्डू भी आप गवा देते हैं। चलिए सिंगल के साथ करेंगे इस ओवर का समाप्ति। एक किफ़ायती ओवर भारत के नज़रिए से। 134 पे 0 भारत। 8 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। कमाल की खिलाड़ी, गज़ब के शॉट्स लगाते हैं, छक्के में डील करना ज़्यादा पसंद है इनको। एक पावरफुल इम्पैक्टफुल पारी इनसे देखने को मिलती है। देखिए ये जो अपर कट देखने को मिला हमें, कवर के सर के ऊपर से छक्का, पुल शॉट के चलते छक्का। लाजवाब इनिंग्स खेलते हैं। जब जब बल्ला बोलता है कुछ अलग ही रन होती है भारत के लिए। ये देखिए 4 छक्के और करीबन 7 चौके के साथ साथ सिंगल्स भी लिए हैं संजू सैमसन ने। बहुत ही बढ़िया एक पारी। मैदान के हर तरफ ये अटैक करने के लिए जाने जाते हैं संजू सैमसन। और एक कमाल की खूबसूरत विगन विल। और संजू सैमसन देखिए इतने कमाल के खिलाड़ी है, बहुत समय तक इंडियन बेंचेस में बिताया अपने कैरियर का। अभी जाके इनके कैरियर को परखा गया है।
शुरुआत करेंगे ओवर का सिंगल के साथ मैट हेनरी। इनके ऊपर नज़र रखिएगा, जब से न्यूजीलैंड टीम में चयन हुई है इनकी, ये काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी करते हुए नज़र आए हैं। 2 गेंदबाज खास करके, एक है केली यान जेमिंसन एंड दूसरे हैं मैट हेनरी। लाजवाब गेंदबाजी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कला है, कलाइयों का बहुत इस्तेमाल करते हैं ये गेंदबाजी में। और देखिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि थोड़ी सी गेंद जो है रुक के आ रही है, ये आसान नहीं रहने वाला है। ये जो परसेंटेज वाला गेम है ये अब से स्टार्ट होगी। यहाँ से भारत कितनी और रन बना पाएगी ये देखने वाली बात होगी। 136 रन बनाने में कामयाब हो चुकी है, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रही है। और अगर इसी हिसाब से बॉल चली, एक और छोटी गेंद को बहुत दूर भेज दिया है, तारामंडल में भेज दिया इस बार तो संजू सैमसन ने। खराब गेंदबाजी, बिल्कुल खराब गेंदबाजी ये संजू सैमसन के सामने। पुल करना जानते हैं ये, देखिए नज़र डालिए इस गेंद को, फील्डिंग प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा छोटी गेंद, और छोड़ते नहीं है ऐसे गेंद को अमूमन संजू सैमसन। और ये मेरे हिसाब से गई है भाई, ये जी नहीं, जस्ट फेंसेस पे लगी है शॉट, काफ़ी बड़ी शॉट है ये, 110 मीटर की ये छक्का। अगली बॉल सिंगल कवर के दिशा में बैक फुट में ड्राइव किया, जिसके चलते दूसरे छोर में अभिषेक शर्मा, एक तरफ एक कुआं तो दूसरी तरफ एक खाई भाई। 143 पे पहुंच चुकी है, गई है ये फिर से गई है हवाई प्रहार, एक और बहुत बड़ा छक्का, बहुत बड़ी मैक्सिमम एक और, इस बार बल्ला बोला है अभिषेक शर्मा का। लाजवाब फुटवर्क, लाजवाब टाइमिंग के साथ जाएगी ये 6 रन, पूरी तरीके से भारत के तरफ ये मैच आती हुई। और देखिए सटीक लाइन पे गेंद थी, गेंद में खराबी नहीं, अभिषेक शर्मा की क्लास है ये। और ये शॉट की भी अगर आप देखेंगे तो ये भी करीबन जाके पूरी तरीके से अपनी जो वीआईपी पवेलियन होती है वहाँ पे जाके लगी, ये भी करीबन 99 मीटर की छक्का। अगली बॉल फिर से पुल करने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेगा। सिंगल के साथ करेंगे ओवर की समाप्ति, और इसके साथ साथ 150 रन भी पूरे हुए भारत के। लॉकी फर्ग्यूसन 2 ओवर में 24 रन, अभी तक की सबसे किफ़ायती गेंदबाज यही रहे हैं। और उनके अलावा केली जेमिंसन, बाकी सबको भाई साहब आज धो दिया है अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने। और जो टाइमिंग देख रहे थे वो मिला नहीं, भाग्य का साथ यहाँ पे 2 रन चुरा लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तालमेल दोनों खिलाड़ी के बीच में, वो जिस शॉट के लिए जा रहे थे वो मिला नहीं, भाग्य का साथ मिला कि नो मीन्स लैंड में गिरा गेंद। और अगली बॉल सिंगल बड़ी आसानी से चुराएंगे। 82 रन पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे अभिषेक शर्मा। और दूसरी छोर में देखिए संजू सैमसन भी उनके ज़्यादा पीछे नहीं है, सिर्फ 10 रन पीछे चल रहे हैं। और मना करेंगे, और गति में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिल रही है। पिछली गेंद जो थी वो 147 के आसपास थी, और ये जो गेंद इन्होंने डाला है वो गेंद देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रही है। 154 से सीधा 143 पे आ गई गेंदबाजी, और आसान बिल्कुल नहीं रहता है जब सफलता मिली। जिस सफल विकेट की यहाँ पे खोज थी वो करके दिखाया है लॉकी फर्ग्यूसन ने। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्विंग और गति में परिवर्तन के चलते एक आसान सा कैच कवर के दिशा में। संजू सैमसन का यहाँ पे विकेट गया है। 70 रन बनाए संजू सैमसन 7 चौके और 5 छक्के के साथ। 153 पे 1 भारत। सूर्य कुमार यादव कप्तान आए हैं। 2025 उतना खास गया नहीं है, लेकिन सोचेंगे कि 2026 उनकी अच्छी जाए। चलिए सामना करेंगे लॉकी फर्ग्यूसन की आखिरी गेंद की सूर्य कुमार यादव। पहली गेंद
कवर की दिशा में खेल लिया है। 2 रन की मांग है लेकिन मिलेगी नहीं, छोटी बाउंड्रीज हैं। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे सूर्य कुमार। होगा ओवर की समाप्ति। 154 पे 1 भारत। मैट हेनरी आए हैं, 2 ओवर में 27 रन दे चुके हैं। अच्छी शॉट, 1 रन चुराएंगे और दूसरी छोर में जो सेठ बल्लेबाज है अभिषेक शर्मा, उनको बल्लेबाजी का न्योता देंगे। और ये कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस की बात होती है। देखिए इतनी बड़ी रन, इतनी ज़्यादा रन हो चुकी है लेकिन फिर भी दूसरे छोर में सूर्य कुमार कितने काम रहते हैं। ये होती है एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको पता है दूसरे एंड में जो खिलाड़ी है वो ये शॉट्स खेल सकते हैं। वाइड यॉर्कर की गेंद को बिल्कुल भेज सकते हैं वो दर्शक दीर्घाओं पर। पॉइंट के खिलाड़ी है मौजूद लेकिन बन के रह जाएंगे दर्शक, क्योंकि ये है भाई साहब शॉट ऑफ द मैच। नज़र डालेंगे इस शॉट के ऊपर। देखिए तेज़ गति की गेंद, जितनी तेज़ी के साथ गई उतनी तेज़ी के साथ ये बाउंड्री रोप के उस पार भी चली गई, बहुत दूर। एक और 99 मीटर की छक्का। 161 पे पहुंच गई है भारत। और खराब शॉट यहाँ पे अभिषेक शर्मा का। मेरे हिसाब से इस वाले गेंद को वो बाउंसर के लिए सोच दिया था कि इस बार बाउंसर आने वाली है, मन बना लिया था शॉर्ट लेंथ के गेंद के लिए। लेकिन कमाल की ये बॉल भी बहुत अच्छी, ये थोड़ी सी देखिए सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी। 2 रन की मांग कर दिया है सूर्य कुमार ने, बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। और इस 2 रन के साथ साथ 90 पे पहुंच चुके हैं। 50 गेंदों में 90 रन अभिषेक शर्मा। फील्डिंग पूरी तरीके से सामने की तरफ, जहाँ पे कि अभिषेक शर्मा अमूमन खेलते हैं, वो वी शेप में ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। तो ये दर्शाता है कि अब थोड़ी सी फुलर लेंथ की गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिलेगी अभिषेक शर्मा के सामने हमें न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से। एक और गेंद अभी भी बाकी है। अगर कहा जाए इस ओवर के बारे में तो फिर 10 रन आ चुके हैं। सूर्य कुमार यादव 2 गेंदों में 2 रन। बहुत अच्छा शॉट, सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाया इस गेंद को। पहले से ही खोटी गेंद थी, इसको और भी ज़्यादा खोटी कर दिया है संजू सैमसन के जाने के बाद सूर्य कुमार यादव। ये देखिए कितनी ज़्यादा ये शॉर्ट लेंथ की गेंद थी। सूर्य कुमार यादव की ये जो शॉट होती है कमाल की नज़र आती है, ये देखिए। और ज़्यादातर ये पीछे जो थर्ड मैन के दिशा में होती है वहाँ पे खेलना पसंद करते हैं, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा टॉप टायर पे गिरती हुई गेंद, और ये शॉट दर्शाती है कि कितनी मेहनती खिलाड़ी है सूर्य कुमार। और ये लाजवाब टाइमिंग हुआ है, खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन फिर भी ढूंढ लिया है यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने इस बाउंड्री को। कमाल के खिलाड़ी है और इस चौके के साथ और भी ज़्यादा नज़दीक अपने शतकीय पारी के। जितने भी दर्शक इस मैच में जुड़ रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लाइक करते हुए जाएंगे। बिल्कुल। फिर से गई है गेंद, छक्के के साथ अपनी शतकीय पारी करेंगे पूरा अभिषेक शर्मा। एक और बेहतरीन खूबसूरत इनिंग्स, एक और पावरफुल इनिंग्स। ये देखिए सेलिब्रेशन, 5 छक्के और 14 चौके शामिल है। 190 के स्ट्राइक रेट से चलती हुई। पिछली शॉट को देखेंगे, दूर रखने की कोशिश थी, खराब लेंथ के साथ यहाँ पे लॉकी फर्ग्यूसन काफ़ी तेज़ गति से गेंदबाजी करते हैं और इस पर ज़्यादा चांसेस भी हो जाती है कि बल्ले पे आ जाए। और ये गेंद जो है ये मैदान के बाहर चली गई है भाई साहब। ये देखिए पूरी तरीके से मैदान के बाहर अभिषेक शर्मा ने। इससे बेहतरीन क्या हो सकती है कि आप शतक पूरा करें और उसके साथ साथ वो शतक के लिए जो छक्का जड़ेंगे आप वो मैदान के बाहर भेज देंगे। देखिए वाह, ये तो भाई दिखेगी नहीं, दिखेगी नहीं। क्या शॉट है भाई, प्रॉपर बाउंड्री के बाहर चली गई बॉल।
मैदान से बाहर भेज दिया अभिषेक शर्मा ने गेंद को। उनकी शतकीय पारी की चर्चा हम करेंगे ज़रूर। बहुत बढ़िया दूर रखने की कोशिश और यहाँ पे सिंगल चुराया संजू सैमसन, माफ़ करिए सूर्य कुमार यादव ने। रन रेट की बात करी जाए तो फिर करीब करीब 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रही है, जो पहले हमने प्रिडिक्ट किया था उसके हिसाब से देखा जाए तो फिर 230 रन के आसपास बड़ी आसानी से पहुंच रही है भारत। गति में परिवर्तन 149 रन के आसपास यहाँ पे पहुंच गई है भारत। माफ़ करिए लोकी फर्ग्यूसन की गेंदबाजी, आखिरी गेंद इनके स्पेल का। बहुत बढ़िया लाइन, बहुत बढ़िया लेंथ के साथ गेंदबाजी करना किया इस बार। डॉट गेंद के साथ ओवर की हुई समाप्ति है। देखिए कुछ झलकियाँ अभिषेक शर्मा का इस शतकीय पारी का। मैदान के हर दिशा में शॉट खेला है, दूर रखने की कोशिश किया, पॉइंट के सर के ऊपर से छक्का, छोटी गेंद किया तो फिर पुल शॉट के साथ चलते चौका, और कवर के दिशा में तो खेलते ही बेहतरीन है। ये देखिए करीबन 5 छक्के जड़े हैं, और उसके साथ साथ जैसे कवर के दिशा में उनकी जो पसंदीदा एरिया होता है वहाँ पे तो भाई चौके की बारिश कर दी आज। 56 गेंदों में 102 रन, कुल 170 के स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं अभिषेक शर्मा। कमाल की ये खिलाड़ी है, कमाल की इनकी ताकत, कमाल की इनकी काबिलियत। केली जेमिसन आए हैं, 2 ओवर में 18 रन दिए हैं अभी तक। रन उतने नहीं दिए लेकिन विकेट भी नहीं लिए हैं। और बहुत अच्छी लाइन, बहुत बढ़िया लाइन। प्लेन मिस हो गया यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का। 23 गेंदें और भी बाकी है, और बहुत ज़ोर से शॉट लगाया है और यहाँ पे छक्का पाया है सूर्य कुमार यादव ने। पूरी तरीके से सामने खेल दिया है, यहाँ पे तीर के जैसा सीधा ये शॉट। इंतज़ार कर रहे थे गुड लेंथ की बॉल को, जानते हैं, और फुटवर्क इतना खूबसूरत होता है सूर्य कुमार का कि आंखें तरस जाती है शॉट देखने के लिए। देखिए ये किस तरह से ये बल्ले को पीछे से लाते हैं, और लाजवाब ये फुटवर्क, और ये दर्शाती है इनकी जो कला है, क्यों ये इतने बड़े बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल खिलाड़ी है, काफ़ी बेहतरीन अपने ऊपर काम किया है इन्होंने। और बहुत बढ़िया लाइन, एक और स्लोअर गेंद की यहाँ पे कोशिश, सिंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बल्ले पे लगी नहीं। 188 पे 1 है भारत अभी। और इस बार कवर के सर के ऊपर से जड़ेंगे चौका। 1 बाउंस एंड 4। थोड़ी सी दूर रखने की कोशिश में यहाँ पे केली जेमिसन ने शॉर्ट लेंथ की गेंद कर दिया है। यहाँ पे 10 रन आ चुकी है 4 गेंदों में। सूर्य कुमार की यहाँ पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और इस बार टाइमिंग उतनी हुई नहीं है, खिलाड़ी दौड़ के आ रहे हैं और विकेट गंवाएंगे सूर्य कुमार यादव। एक तेज पारी की होगी यहाँ पे समाप्ति। भारत के कप्तान इस ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ने के बाद अपना विकेट गंवाया है, और इस बार जो एलिवेशन ढूंढ रहे थे सूर्य कुमार यादव वो मिली नहीं, क्योंकि स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे देखिए कुछ बातचीत हुआ था ये जाने से पहले। केली जेमिसन और सूर्य कुमार काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। 19 रन बनाए सूर्य कुमार यादव ने, 192 पे 2 भारत। हार्दिक पांड्या आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि दूसरे छोर में अभिषेक शर्मा हैं। लेफ्टी एंड राइटी की कॉम्बिनेशन के साथ जाती हुई भारत। पहली गेंद, शॉट लगाया है, खिलाड़ी है मौजूद लेकिन उनके सर के ऊपर से गई है ये छक्के के लिए। दर्शक बन के रह गए। हार्दिक पांड्या ने छक्के से किया इस मैच का आगाज। इस रन बनाने की ये टेक्निक है हार्दिक पांड्या के पास, हमने प्रैक्टिस में भी देखा था। चलिए चर्चा करेंगे उनके बारे में। अभिषेक शर्मा
उड़ा के खेलने की कोशिश कर रहे थे, बल्ले के बीचों बीच आई नहीं, जिसके चलते 1 रन मिलेगा। और प्रैक्टिस मैच की एक झलकी हमने देखा था कि वहाँ पे अभिषेक शर्मा हार्दिक पांड्या को भारत के कोच गौतम गंभीर बोल रहे हैं कि वहाँ पे मारो, और वो लगा भी देते हैं छक्का। और एक और फ्लैट छक्का इस बार। हार्दिक पांड्या छक्के से डील कर रहे हैं इस मैच में। ये देखिए यॉर्कर की गेंद थी, गेंद बिल्कुल ख़राब नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी जगह बनाई हार्दिक पांड्या ने। क्या ही बल्लेबाजी। 2 बॉल 12 रन पे पहुंच चुके हैं। और अगली गेंद कवर के दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं। लोकी फर्ग्यूसन, ये देखिए सारे गेंदबाज जो है आज महंगे साबित हुए हैं। सिर्फ 2 रन बना, 2 विकेट गंवाया है भारत ने। अच्छी शॉट, लेकिन 1 बाउंस के साथ पहुंचेगी खिलाड़ी के पास। अब आएंगे अभिषेक शर्मा सामने, जो कि पूरी तरीके से सेट हैं। 57 गेंदें खेल के 103 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये टाइमिंग हुई नहीं है अभिषेक शर्मा का। एक और सफलता यहाँ पे न्यूजीलैंड को। मैट हेनरी फिर से छोटी गेंद के ट्रैप में फंसाया अभिषेक शर्मा को। मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी कमिट कर बैठे इस शॉट को, जिसके वजह से वो ताकत जो चाह रहे थे वो ताकत मिली नहीं, और एक आसान सा कलेक्शन यहाँ पे न्यूजीलैंड के बल्ले फील्डर्स के लिए। लेकिन अभिषेक शर्मा ने कमाल की ये मैच खेला है। 103 रन बनाए, 5 छक्के और 14 छक्के चौके के साथ। 206 पे 3 भारत। रिंकू सिंह को थोड़ी सी आगे भेजा गया है इस बार, क्योंकि ओवर बाकी है सिर्फ 2। आखिरी गेंद इस ओवर का। सिंगल से करेंगे शुरुआत अपनी इस इनिंग्स की, और स्ट्राइक भी रखेंगे अपने पास रिंकू सिंह। 208 पे 3 भारत। 207 पे 3 भारत। चलिए 2 ओवर, रिंकू सिंह सामने हैं। बिल्कुल गई है ये छक्के के लिए, और काफ़ी ताकतवर खिलाड़ी है, बॉटम हैंडेड खिलाड़ी हैं। पूरी तरीके से जो पावर है वो जनरेट करते हैं, और क्यों ये सबसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज में से एक माने जाते, ये शॉट बयां करती है। पहली गेंद में ही इस गेंद को भेज दिया है दर्शक दीर्घाओं पे। ये देखिए खराब गेंद थी नहीं, लेकिन ये पूरी तरीके से काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास। बल्ले के बीचों बीच वो जो स्वीट पोर्शन कहते हैं जिसे हम, वहाँ पे लगी, और बहुत बड़ा छक्का ये। 77 मीटर का ये यहाँ पे छक्का देखने को मिला रिंकू सिंह के बल्ले से। पहली गेंद सिंगल। ओह, यहाँ पे अपील किया है, लेकिन सिंगल भी चुरा लिया है यहाँ पे हार्दिक पांड्या के चलते। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आउट है तो फिर ले लेना चाहिए था रिव्यू, क्योंकि अंपायर्स कॉल होती, आप रिव्यू भी नहीं गवाते। खैर, और ये ताकत, ये हार्दिक पांड्या की कुंफू पांड्या वाली शॉट। बैकफुट में जाके ये छक्का जड़ते हैं। सामने की जो गेंदबाज हैं वो है केली जैमिसन। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है, काफ़ी तेज़ गति के गेंदबाज हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या कहा कि नहीं भाई, सिर्फ टाइमिंग। ये देखिए बल्ले के बीचों बीच, और इंतज़ार कर रहे थे शॉर्ट लेंथ की गेंद को। उतनी बड़ी छक्का नहीं है, लेकिन मैक्सिमम तो मैक्सिमम है। 6 रन मिलेंगे पूरे। और इस बार स्लाइस किया है, इस बार पॉइंट के सर के ऊपर से जाएगी 6 रन। अपर कट के चलते ये मिलेगी 6 हार्दिक पांड्या को। 2 गेंदों में यहाँ पे 2 छक्के जड़ दिया है। खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन फिर भी बन गए दर्शक। ये देखिए, ये ओवर में अगर बात करी जाए तो फिर 19 रन ऑलमोस्ट आ चुके हैं। और ये ऐसा ठीक लाइन लेंथ के साथ गेंद है, लेकिन इसे भी करेंगे चौके में तब्दील हार्दिक पांड्या।
अच्छी गेंद होने के बावजूद अगर ये चौके पे जाए तो फिर आपकी कोई गलती नहीं है केली जेमिसन। ये पूरी तरीके से क्लास है हार्दिक पांड्या का। खूबसूरत खिलाड़ी, छक्के में भी तब्दील करते हैं, ग्राउंड में लगाते हैं तो फिर चौके में भी तब्दील करते हैं। हल्की हाथों से इस बार भी पॉइंट की दिशा में गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बल्ले के निचली भाग में लगी और सिंगल के साथ करेंगे ओवर की समाप्ति। काफ़ी किफ़ायती ओवर। 26 रन आए थे पिछले ओवर में, आखिरी 6 गेंदें। ओह, बहुत बढ़िया टाइमिंग, सिर्फ दिशा दिखाया। पैरों की तरफ गेंद थी, पेट्स में गेंद थी और वो काम करके दिखाया हार्दिक पांड्या ने। 235 पे पहुंच गई है भारत इस मैच में भी। एक समय पे 265 की स्कोर बता रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से 235 भी खराब शॉट नहीं, खराब स्कोर नहीं है, लेकिन ये खराब गेंदबाजी। छोटी मैदान है, हार्दिक पांड्या आपके सामने हैं, ऐसी गेंद नहीं कर सकते आप इनको, क्योंकि बॉटम हैंडेड खिलाड़ी हैं, काफ़ी ताकतवर खिलाड़ी हैं। छोटी गेंद करेंगे तो फिर ये छक्के में तब्दील करेंगे ज़रूर हर एक गेंद को। 2 गेंदों में आ चुके हैं 10 रन, 241 पे पहुंच गई है भारत। नहीं, मना किया। चलिए, 1 सेकंड के लिए लगा जैसे काफ़ी ज़्यादा तालमेल की गड़बड़ी थी। हार्दिक पांड्या को स्ट्राइक रखना था अपने पास। क्यों रखना था? इसलिए रखना था। कमाल की काबिलियत इन खिलाड़ी के पास। यॉर्कर लेंथ की गेंद को आगे बढ़ के फुल टॉस में कन्वर्ट किया और खिलाड़ी के सर के ऊपर से 1 बाउंस चौका। मैदान के हर तरफ शॉट लगा चुके हैं हार्दिक पांड्या। अब अगर देखा जाए तो अब कहाँ गेंदबाजी होगी। ओ, पूरी तरीके से सामने की तरफ खेला है। क्या यहाँ पे 2 रन मिलेंगे? नहीं, मना करेंगे रिंकू सिंह। और ये देखिए, 2 गेंदें अभी बाकी है और काफ़ी नाखुश नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हार्दिक पांड्या, क्योंकि उनके पास एक मौका था अरशद के पारी पूरी करने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसको दौड़ते तो फिर आउट भी हो सकते थे। और आखिरी गेंद और शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़ोर से बल्ला तो घुमाया था लेकिन आई नहीं। सिंगल के साथ करेंगे ओवर की समाप्ति। 20 ओवर के बाद 247 पे 3 भारत। कमाल का विशालकाय लक्ष्य। क्या ही मैच गई है भाई, क्या ही मैच गई है। और अगर ग्राफ की बात करें, बिग व्हील कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे भाई, ठीक है। दूसरे इनिंग्स में आप सबके साथ मिलेंगे हम। एक तो ये वाले म्यूज़िक में ना कॉपीराइट आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई। देखिए, शुरुआत किया था अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने। शुरुआत थोड़ी सी धीमा नज़र आया था, लेकिन बाद में जो रफ्तार पकड़ी अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने, पूरी तरीके से इस मैच की नक्शा बदल दिया। 150 रन की वहाँ पे पार्टनरशिप पारी देखने को मिली संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का, जिसमें अभिषेक शर्मा ने बनाए शतक और संजू सैमसन बनाए 70 रन, और वो भी 36 गेंदों में। उसके बाद सूर्य कुमार की एक ताबड़तोड़ पारी, फिर आती है आती सी पारी हार्दिक पांड्या का। 13 गेंदों में 45 रन, हर एक तरफ छक्का यहाँ पे देखने को मिला। कमाल के खिलाड़ी। ये देखिए कितनी खूबसूरत मैदान। अब समय है गेंदबाजी का भारत का। जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करेंगे। चलिए अब कर देते हैं इंग्लिश कमेंट्री पूरी, क्योंकि 11:30 होने वाला है। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं। ऑडियो, हिंदी कमेंट्री मुझे थोड़ा सा बख्श दो गाइस। अभी मस्त हिंदी कमेंट्री हो गया, अब इंग्लिश कमेंट्री में आप लोग एंजॉय करोगे।
Bumrah coming in. Two straight and punch through the leg side. हाँ भाई, Doesn't करने even चला wait जाएगा। to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Massive outside edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Edge, but it drops safely. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Couldn't get it through the field. 6 runs added in that over. New Zealand are 6 for none. Singh coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. Some adjustments to the field. Singh from the Garware Pavilion end. Singh deflates the crowd there, pulls up short, and that's going to be a dead ball. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Got that away nicely. Straight drive, mid-off will cut that one off.
Edged it. No one there. Could be four. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Nine runs added in that over. New Zealand 15 for none. An excellent over by the batter, but the bowlers just reined them in a tad. Was quick onto that in the infield. Into the gap and finds the boundary. Wonderful shot for four. Picked up four with a lovely shot off the front foot. Williamson has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Perfectly timed. Pushed onto the front foot and presented the full face of the bat. Yadav, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Can't get that outside the ring field. Boomer over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be four. What a lovely shot. Really good timing out of the middle and raced to the boundary. How will he reply? Finds the fielder with that shot. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder.
Cuts that off well in the infield. Thick edge. End of the over. 3 runs coming off it. New Zealand a 31 for none. Bumrah from the Tata end. Pandya into the attack now from the Tata end. Edge, but it drops safely. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Drilled that one away. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Edged, unplayable. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. India kept the batters quiet in that over. So far, though, no wickets for the endeavour being shown. Chakravarti, the right armour, is coming into the attack from the Garware Pavilion end. Power and precision in that shot. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right. Swept away, but finds the fielder. Oh, that's a great shot early on, wide of cover, and that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though.
You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. Can he come back with a dot ball? शायद ये अपील क्यों नहीं कर रहे भाई, ये तो क्लियर एलबी हैं यार। This could be trouble. Caught. That's a ridiculous catch. And gone. That's a fantastic catch. At long last, they have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings, but all the same, it's been fabulous to watch. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. Straight to the fielder. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, and dispatches it to the boundary. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Doesn't beat the infield. 5 runs added in the over. New Zealand are 55 for 1. The batters are working the strike around, picking gaps for boundaries, but they might need to start taking some chances in the back half of the innings to keep in touch. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Does very well to quickly get across to this one. Drilled that one away. New Zealand weren't given much of an opportunity there, a very tidy over.
Pandya from the Tata end. This should be close. That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Yeah, it can be very disheartening seeing good delivery smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. Onto that early, that could be 4. Not what they were after. 6 off the last ball. Now it's 4 more. Getting nicely settled at the... crease now. Would have to be very happy with that last shot. Some adjustments to the field. That looks gone. Oh, great run out. They have the wicket they wanted. A huge blow. Seifert gone for not many. Now, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Phillips taking guard. Has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. That's the over. New Zealand 70 for 2. Massive outside edge. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. The captain making some adjustments to the field here. Couldn't get it through the field.
Nice shot, pierces the infield. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Lovely cover drives straight to the extra cover fielder. 4 runs added there. New Zealand a 74 for 2. Oh my, that's racing away. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. Onto the front foot, punches it away to the boundary. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Strays onto the leg and glanced it nicely. Might just get to the boundary rope. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. End of the over. New Zealand are 86 for 2. Chakravarti from the Garware Pavilion end. Power and precision in that shot. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Oh, that's beautifully struck. Right out of the guts and all the way. That's worth the ticket money alone. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. Top class innings. Been playing very nicely out there and brings up the half century. Oh, what else do they have in their bag of tricks? Just not much seems to be working at the moment. Was quick onto that in the infield.
playing all their shots in that over, a very expensive over. Dubé, the pace bowler, coming into the attack. Onto the front foot, super shot, should be 4. Errs on the side of bowling slightly fuller, and they've been put away. Yadav, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Straight drive, mid-off, will cut that one off. Can't get that outside the ring field. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. That's the big one, a maximum. Away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast truck. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. The batters have controlled the middle portion of this innings, but they'll need to launch now with wickets in the dugout. Patel, the left-arm orthodox bowlers, coming into the attack from the Garware Pavilion end. How will he reply? Got that away nicely. Caressed that nicely through the gap to the boundary. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, and you're going to get punished on this pitch. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Big edge. Nicely fielded out deep on the boundary. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Square cut, finds point, no run.
End of the over, 5 off it. New Zealand are 115 for 2. Been some really good overs strung together. They've taken some risks, along with some good running. A very good total is on the way. Dubé from the Tata end. Edge, but it drops safely. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Jeez, timed that well. That just drifted a bit and pounced on. Hit high and mighty. They'll be very happy with that. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Brilliant shot there. You give that much width and you're asking for trouble. That was so well timed and flew over the boundary. The shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. 2 boundaries and 2 balls. Great shot. It was a good length to try that, and they did that with maximum results. 6 more. There's a lot to like about this innings. Excellent stroke play so far. That shot was all about power. Dubé shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Nice shot. Just a flick off the pads. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you still have to hit them. Majestic batting. Timed that perfectly. Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Two straight. It's just been helped on its way for a maximum. Fine shot there. Showing that they mean business this innings. Barely seem to have got going and they're hitting sixes. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that with them. Well, now that could be out of the ground. That's a tremendous shot, just sailed away. End of the over, New Zealand 156 for 2. The batters have controlled the middle portion of this innings, but they'll need to launch now with wickets in the dugout.
The right arm fast bowler is coming into the attack from the Tata end. The captain's going to change things around in the field. Oh, great shot. Hit that so hard. Pressed forward, got the body shape right and launched it. One for the textbook. Conway has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Chance. Lovely bit of batting. The century comes up, and really that has been a well-controlled innings. Hasn't given the bowlers much of a chance, that's for sure. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Getting nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Magical shot into the vacant fine leg position, and I do not think anyone's going to stop that. That was a solid shot, really well played. Ball was dropped just a little shorter, and a great shot off the back foot. Bumrah is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be go back to your stock delivery and then build from there. That's the big one, a maximum. Away she goes. If you lose the pictures, it's because it's hit the broadcast truck. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. End of the over, massive. 27 off it. New Zealand, 183 for 2. Well, this total was always going to be a challenge, going at 10 plus. They need to accelerate again to get close enough to the required rate. Singh, the left arm medium bowler, is coming into the attack from the Garware Pavilion end. Captain's going to change things around in the field.
Sing from the Garware Pavilion end. A bit of a change up in the field now. That ball has been hit. It has flown into the crowd. To get that much power coming forward on the front foot is ridiculous. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. That's huge. That's a biggie. It is out of here. Absolutely smoked off the bat. That was just a massive shot. Middled it and it flew over the boundary. Brilliant stuff. Boundary last ball. What's to come this delivery? I wonder. This could be out. And taken it deep, fine leg. Didn't have to do too much. Just held on to a straightforward catch. Oh, great work. Held their nerve while the ball was in the air, and they've taken a good catch. So that's the third wicket down, trudging off the field. They're well and truly into the middle order now. Always nice to come into bat after the openers have had a good partnership. Gives you time to settle and gradually build. Drilled that one away. Well, that was a struggle, getting smacked all over the park. Great shot through the gap. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Great shot. It was a good length to try that, and they did that with maximum results. 6 more. Well, that's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Clever shot, moved across the line of the ball and just clipped it away. Fine leg won't stop that. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. Don't always mind getting hit for runs. What's important, just focus on getting the next delivery right.
over the infield with a cracking shot. Playing all their shots in that over, a very expensive over. They've played wonderfully all innings, but the required run rate's demanding more from them if they can. Into the final over, just too many runs needed to get victory, I would suggest, unless the bowling goes completely awry. Oh my word, that is huge. Middle, that's a monster of a shot. That was seen so early. The timing was brilliant and that is stayed hit. Fantastic. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. Have to go for it now. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. They really need a boundary, this ball. Too straight and punched through the leg side. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Yadav, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. That is quite extraordinary. Phillips, don't do it to them like that. What a shot. Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket's going to come. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Just need to keep it simple. Line and length, roundabout off stump. That'll force a mistake. A few moves made in the field. No, no, no. Terrible shot.
India bring it home in a close one. So many twists and turns. I think the best team won in the end. What a fantastic match. That's the end of our broadcast for now. Hope you enjoyed the match and join us again real soon.